VST1. The first question. When outermost orbit, okay, of an atom has less than 4 electrons, the material is generally a gas. कौन होगा आंसर? Non-metal. Non-metal. How it is non-metal? कौन? Non-metal or metal? Sir, metal. Yes, metal is the right answer. Okay. कहीं ना तुम जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो रही ओके तुमर के सेल एल सेल एम सेल ये तुम डिफरेंट ऑर्बिट अच्छी ना जो डिफरेंट ऑर्बिट जो रहा तुम कौन हम ना यार कैपेसिटी है दीटा यार कैपेसिटी है तुम 8टा के एल एम ओके बाह्यतम कक्ष जदि तुम इलेक्ट्रॉन संख्या लेस देन 4 रहा दीज आर कंसीडर्ड अंडर योर मेटल ओके if it is greater than 4 then it is considered as non-metal okay if it is equal to 4 then these are called as semiconductors okay so option B is your right answer. Next question, a PN junction act as a dash controlled switch, bidirectional switch, unidirectional switch, none of the above. Which is the right answer? The control switch. Sir, unidirectional. हाँ यूनिडायरेक्शनल इज द राइट आंसर कहीं ना पीएन जंक्शन को जगह भी कंट्रोल करूनी आशीष तुम्हें बाइडायरेक्शनल देथवा बाइडायरेक्शनल होता केतबेले ना जेटा जिनर डायरेक्ट जदि होता एटा बाइडायरेक्शनल होता बुझला तो जेहेतु पीएन जंक्शन डायरेक्टटा केवल तुमर ओनली वन डायरेक्शन रे तुमर कोन करूची ना कंडक्ट करूची तेणु करी एटा हैला तुमर यूनिडायरेक्शनल इट इज ओनली अलाउइंग द पॉजिटिव दैट मींस योर फॉरवर्ड बाइसिंग when this is positive this is negative at that time P and N junction na this is P this is your N when P is positive N is your negative in this condition only this is going to be conducting so that this is your unidirectional जदि तुमरो P एटा हेगला N जदि एटा हेगला तुम जदि याको नेगेटिव दबो याको जदि पॉजिटिव दबो एठी बैंड विड्थ तुमरो बढ़ी जिवो बढ़ी गला आडो एटा कंडक्ट करि परिबो नाही जदि कंडक्ट न करि पारला ताले एटा तुमरो कोन हबो ना unidirectional hobo not bidirectional okay only one directional current can be flow a genodide has gas 1 pn junction 2 pn junction 3 pn junction none of the above 1 pin junction. Very good. A genodide has only 1 pn junction and the junction have highly doped बुझला तो यार जो सिंबल रे डायड रे सिंबल रे तुमरो कोन हला ना केवल गोटे जेड रे सिंबल रहला ओके so ए जगह कौन हम ना व्हाट एवर द पीएन जंक्शन वी आर यूजिंग दिस इज नॉट नॉर्मल पीएन जंक्शन हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन जिते डोपिंग जिते तुम अधिका हो ओके से तुम कौन हम ना करंट विल फ्लो थ्रू बाय द माइनॉरिटी कैरियर ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर करंट इज गोइंग टू फ्लो so that genodide is working in your forward biasing as well as reverse biasing so that this is also called your bidirectional diodes okay this is also called your bidirectional diodes and these are only one pn junction okay kebe bhi 2 pn junction kahibani okay next question if the AC input of a half wave rectifier has an RMS value of 400 divided by root 2 volt then the diode PIV rating kete आर ये तुम हाफ वेव रेक्टिफायर दे दीजिए हाफ वेव रेक्टिफायर तुम पचार पीआईवी ताले आम जानी जे पीआईवी इज नथिंग बट द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज ओके दैट इज नथिंग बट योर रूट 2 टाइम्स ऑफ VRMS ताले इन द क्वेश्चन ऑलरेडी इट इज गिवन दैट VRMS इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय रूट 2 so रूट 2 getting cancel and the value is your 400 volt is the PIV रे formula √2 into VR. So that the answer is your 400 volt. Okay, PIV is equal to √2 times of VRMS. The PIV rating of a diode is exceeded. यदि PIV rating गोटे diode यदि हम बढ़ाई दबा ताले कौन हबो गैस वो PIV
माने पीक इनवर्स वोल्टेज जदि गोटे डायोड रे बढ़ी जिवो ताले कोन हबो destroy. So destroy. हाँ इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय काहे के एटा डिस्ट्रॉय हबो तमरो ना पीआईवी इज नथिंग बट द पीक इनवर्स वोल्टेज माने हला कोन ना लेट्स कंसीडर दिस इज योर पी दिस इज योर एन and if this p is connected to negative and this n is connected to the positive then what will happen here now these are your कौन p रे तमरो कौन अछि ना more number of holes and n रे तमरो हला electrons बुझला तो these electron will go this side these holes are going to this side so that there is less number of hole and electron in the barrier okay or in the junction तेणु करी एटा तमरो कोन हबो ना जेताले पीक इनवर्स वोल्टेज जेताले तम रिवर्स वोल्टेज जेते बढ़े बढ़े जीवो तेताले एमिति ओटा टाइम आसीबो जो जगह डायरेक्ट पूरा डिस्ट्रॉय कर दियो बुझला तो सो डिस्ट्रॉय इज द राइट आंसर ऑप्शन बी a pn junction that radiates energy as light instead of heat okay instead of as LED. heat is called your led is nothing but your called your light emitting diode बुझला तो these are coming under the category of led in the second vst we are going to discuss about the which color will come when the material is changed बुझला तो just like green ପାଇଁ तमर को material ଆମେ यूज करबा red ପାଇଁ को material यूज करबा like that questions will come in from led in the next vst a transistor is a dash operated device a transistor is a both कौन बेटा Current से. current or voltage or current transistor is a current operated device बुझला तो transistor is a current operated device जो जगह रे भी तुम बीटा रो वैल्यू बाहर करछो बीटा इज नथिंग बट एरो कोन हेगला तमरो लेट्स कंसीडर IC by IB ओके लाइक दैट ता माने एटा हला तमरो कोन ना करंट रो तमरो एम्प्लीफिकेशन केते होची सेटा हला तमरो दैट इज कॉल्ड योर ट्रांजिस्टर ओके सो इट इज ए करंट ऑपरेटेड डिवाइस नेक्स्ट हला तमरो रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू केते हेगला एटा ऑलरेडी डायरेक्ट फार्मूला हम तुम कहि छी एटा मन रखो आराम से एटा गोटे क्वेश्चन निहाती पकेबा एग्जाम जे कोन से Sir, तीनटा स्लॉट option भीतर C. गोटे आसीबो ऑप्शन सी राइट बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय yes 1 minus of alpha so this is the right answer next question in a transistor IC given and IE given find the value of a beta just now I have told you that beta is nothing but your it is the ratio of IC divided by IB ओके ना IC हला तमरा कलेक्टर करंट IB हेगला तमरा बेस करंट ताले बेस करंट हम केन बाहर करबा ना हमें जानि छी IE is equal to IC plus of IB ताले IE रे वैल्यू केते हेगला एटी 100 not 5 ताले इस जगह हमें लिखि देबा 100 not 5.5 is equal to 100 plus of IB अतएव we can say here IB is equal to 100.5 minus of 100 so this is nothing but a 0.5 ताले बीटा is equal to केते हेगला ना 100 divided by 0.5 ताले divided by 0.5 कर देले this is coming under your it will come your 200 right so 200 is the right answer बुझला तो नेक्स्ट क्वेश्चन हला तमरा कोन देखो इन ए ट्रांजिस्टर द सिग्नल इज ट्रांसफॉर्म सिग्नल ता तमरा ट्रांसफर्ड होची फ्रॉम ए डैश सर्किट इन ए ट्रांजिस्टर सिग्नल ता कोठु कोठी की ट्रांसफर होची Sir, high to low. आर यू श्योर low to high हाई टू लो और लो टू हाई low to high, Low to high. yes low to high is the right answer okay तमरो तुमको मु बारंबार कहिची जो हमरो ट्रांजिस्टर रे हमें जो सिग्नल ता पाई थाउ सेटा तमरो कोन था से सिग्नल ता तमरो आसिला को तमरो ये जो सिग्नल ता हमरा हमें जो दिल्ली तक जो सप्लाई दिल्ली ये सिग्नल ता तमरो कोठ आसिला ना सिग्नल ता आसिला तमरो ट्रांसड्यूसर रो बुझला ना नहीं मेकानिकल डिवाइस रो सिग्नल ता आसिला एटा को जते बेले हमें एम्प्लीफाई करबा से जगह रे कोन लगेबा ना हाई वोल्टेज रो सप्लाई लगेबा लगेला पर तमरो कोन हबो एटा जाके एम्प्लीफिकेशन हबो तेणु करी एठो तक जो रहिला वोल्टेज रो रहिला एटा हेगला तमरो लो रेजिस्टेंस दिस इज योर लो रेजिस्टेंस and this is your high resistance okay
and due to that high resistance, so signal is amplified. तेणु करी low resistance to high resistance is the right answer. Okay, not high to low. जदि high resistance तुम जदि इनपुट रे रहइबो ताले सर्किट रे करंट फ्लो करिवोनी, काहे कि ना IB रो वैल्यू 0 हो जिवो. जदि IB रो वैल्यू 0 हो जिवो हमर एटी एम्प्लीफिकेशन वैल्यू जो इनफिनिटी हो जिवो. बुझिला तो. तेणु करी हाई टू लो केबे होबोनी, लो टू हाई हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Silicon transistor is biased with a base resistance method. Base resistance method रे एटा को हम बायसिंग करिछि. से पचार जे तुमको जे बीटा वैल्यू दे दीजिए, VBE दे दीजिए, सिग्नल कलेक्टर करंट IC दे दीजिए, VCC भी दे दीजिए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बेस रेजिस्टर RB? या पे गोटे डायरेक्ट तुमरो फार्मूला अछि. फार्मूला हे गला कोन तुमरो ना दिस इज योर IC. ओके, एटा हेगला तुमरो कोन ना बेस बाइसिंग, एटा ला एमिटर बाइसिंग, एटा ला वोल्टेज डिवाइडर, एटा ला तुमरो कलेक्टर फीडबैक सर्किट. जो क्वेश्चन टा आछि तुमरो एठु ही आछि. बुझला तो. से कहला जी यार क्यू पॉइंट हेगला तुमरो केते IC इज इक्विवेलेंट टू योर IC रे वैल्यू हेगला बीटा होल इनटू VCC माइनस ऑफ VBE डिवाइडेड बाय RB. ताले हमर बर्तन जो सॉल्यूशन करबा थिला, आमे बर्तन जानि गेल जे IC इज इक्वल टू तुमरो कोन होला. क्वेश्चन ने देखो कोन देछि तुमको बेस बाइस देछि ना नहीं. ए देखो transistor is biased with base resistance method. ताले base resistance method is nothing but this is your base resistance. the base रे गोटे resistance हम लगे कि बाइसिंग करबा. ताले बीटा होल इनटू VCC माइनस ऑफ VBE डिवाइडेड बाय RB. ओके, हमको पचार जे RB रे वैल्यू केता हो. ताले RB इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ VCC माइनस ऑफ VBE डिवाइडेड बाय IC. ओके, ताल तमरो बर्तन देखो क्वेश्चन तमरो कोन दे देछि बीटा इज इक्वल टू 100, VBE दे देछि 0.7, VCC 6 आ IC दे देछि तमरो 1 मिली एम्पियर. सो दिस इज योर बीटा वैल्यू दे देछि तमरो 100, VCC दे देछि 6, VBE दे देछि 0.7 एंड यार वैल्यू तमरो देछि 1 मिली एम्पियर. 1 मिली एम्पियर नथिंग बट 10 टू द माइनस 3 एम्पियर. ओके, so that we can write here 100 into 5.3 into 10 to the power 3. So this is nothing but your 530 kilo ohm. So 530 kilo ohm is the right answer. Option B is the right answer. Clear? Next question देखो. The purpose of a capacitor. Capacitor हमें कौन पाए लगे जी? The purpose of a capacitor in a transistor amplifier is to. Capacitor रो काम कौन? In a transistor amplifier. Transistor amplifier रे तो कुछ गोटे capacitor जो हमें लगे जी तारा काम कौन? बाइसिंग रे. हाँ, that is for your coupling or biasing of the AC component. Option C is the right answer. Either तुम्हारा coupling करिवो and or biasing करिवो. Okay, so biasing or coupling is the right answer. Okay, next question तुम्हारा कौन दे देखो. In amplitude modulation, the dash of carrier is varied according to the strength of signal. Strength of signal रे तमरो कौन वेरी करिवो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रे? सर एम्पलीट्यूड. हाँ, ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड में वेरी करिवो, सेथले कि ताना हला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. जो जगह फ्रीक्वेंसी वेरी करिवो सेथले ताना जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. डीमॉड्यूलेशन इज डन इन डैश. ओ जगह रे तमरो डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस ता स्टार्ट हुए. रेडियो रिसीवर. रेडियो रिसीवर तुमको कहै तुम जिते कौन हम सिग्नाल टा जिते पड़ेगा आंटीना रे सेते तुम गोटे रिसीवर रही. रिसीवर तुम कौन कर फास्ट जो सिग्नाल टाक जो रिसीव कला, रिसीव कर सारा डीमॉड्यूलेट कर. डीमॉड्यूलेट कहीं कर ना तुम क्यारियर वेव फ्रिक्वेंसी और सिग्नाल फ्रिक्वेंसी दीटा तुम कौन हो कंबाइन हो. डीमॉड्यूलेटर अलग अलग करदेव. अलग अलग कलापर तुम जो सिग्नाल टा अच्छी से आम्प्लीफाई कर पठेदेव लाउड स्पीकर पर. ओके, next question. A 50 kilowatt carrier is to be amplitude modulated. Okay, level of 85%. What is the carrier power after modulation? से कुछ देखो ये है तमरो कैरियर अच्छी. कैरियर रो पावर टा मॉड्यूलेशन पड़े चेंजेस हबो नाही. जदि चेंजेस न हबो द आंसर इज योर सेम 50 किलोवाट इज द राइट आंसर. जदि एठी पचारतला व्हाट इज द टोटल पावर, then total power PT is equal to PC plus of PS. PS है गला तमरो कौन ना साइड बैंड पावर. PC है गला तमरो कैरियर पावर है गला 50 and PS we can calculate
in the second question, in the above question, what is the power of a sideband power? Sideband power है गला PS, which is equal to half into m square into PC. ताले half को half रहिला. What is the value of m here? ना m here है गला तमरो कौन 0.85. That is your modulation factor. केते amount रो तमरो modulation होची. ताले 85% रो modulation होची. तेणु करी m is equal to 85 divided by 100 is equal to 0.85. ताले into 0.85 रो square into 50. याकु जेतल तमे calculate करिवो, it will coming under your 18.06. Okay. Unfortunately, there is no option, but this is your 18.06. So we have to change the option, and 18.06 is the right answer. Okay. But in this case, carrier power तमरा पचार जहाँ भी तमे supply देइथबो carrier रो जति की power थिबो सेति की power ही रहिबो modulation हैला परे. तेनु को एठी जदि 50 किलोवाट एटा भी हबो 50 किलोवाट. बुझला तो? सो एटा 16 नंबर है गला ऑप्शन सी 18.06. एटा देखिबो तमे कैलकुलेटर मारि के देखो 16 नंबर 16 नंबर एटा तमरा हला साइड बैंड फ्रीक्वेंसी रो डायरेक्ट फार्मूला. ओके. एटा को अप्लाई करले तमे डायरेक्टली 18.06 पाइ जो. आ गोटा तमे कोन कहउछो को फार्मूला को आउथर को बुझला तो? PS is equal to केते half m square into PC. So option 3 is the right answer. Next. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन तुम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट तुम दे देती. फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट माने IG. ओके. इज इक्वल टू 50 माइक्रो एम्पियर दे दी. दैट इज नथिंग बट 50 into 10 to the power minus 6 एम्पियर. ओके. तो व्हाट इज दी और इट्स सेंसिटिविटी तुम पता. सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1 divided by IG, and that is nothing but your 1 divided by 50 into 10 to the power minus 6, which is nothing but your 10 to the power 6 divided by 50. That is nothing but your 1000 into 10 to the power 3, 1000 into 10 to the power 3 divided by 50. एटा को एथरे काटि दियो. ताबे तले 20 हे जो 20 किलो by volt. 20 किलो by volt is the right answer. Option D. Okay. बुझेला? नेक्स्ट क्वेश्चन. ए galvanometer of resistance गोटे galvanometer एठी लागि जी जहार की resistance हे जे तमर G हे. ओके. is shunted by a small resistance. याको हमें shunting करछि गोटे small resistance लगे जी याको हमें shunt करछि. S हे गला small resistance. The resistance of the resulting ammeter, ताल total ammeter resistance केते. ताल total resistance हे गला 1 by RT is equal to 1 by G plus of 1 by S. ताल RT is equal to केते हे गला ना GS into G into S divided by G plus C. एटा ऑलरेडी तुम जानि छो. GS एटी कॉमन आनि दियो. ऊपर हे गला S plus of G. तुमको एटा जतला RT दरकार है याको रेसिप्रोकल कर दियो. रेसिप्रोकल कर देले GS by G plus C. अरे हां माने 1 by RT is equal to GS एटी हला S plus of G. एटा छ 1 by RT हला एटी की ताले खाली RT केते हे जिवो रेसिप्रोकल हे जिवो यार GS divided by G plus S. So option A is the right. Okay. A voltmeter is connected in dash with the circuit component across the potential difference is to be measured. Voltmeter टा हमें केमिति सर्किट रे कनेक्टेड करिया. parallel connected करिया. voltage measurement में parallel, current measurement में series. Okay. Which of the following is the application of a transducer? को जगह तुमरा transducer application होची. Sir, all of this. All of these. Okay. all of these. Everywhere we are using the transducer. एठी तमरा माइक्रोफोन रे कोन हबो. माइक्रोफोन रे हमें जहा कहूची sound energy is converted to electrical. Sound to electrical. Okay. तमरा transducer रो माने हला कोन ना the device which converts one form of energy to other form of energy. That is called a transducer. Loudspeaker रे हला तमरा कोन ना electrical to sound. Electrical to sound. Antenna sensor है गला तमरा कोन ना ये जो जेतला तमरा सेंस जेतला कला whatever the frequency it is sensing बुझला ना signal to electrical. Okay. So किंबा electrical to signal. Antenna तमर जदि electrical to signal करि परिबो किंबा तमर electrical जो रहउची तार wave टाको कन्वर्ट करि परिबो. Receiver जे देथांदा signal to electrical है. So all of the above is the right answer. So I hope we have discussed all the 20 questions of VST, and one more VST I am planning to do. 2 more VST. Every chapter 3 टा लखा VST हबो. VST 1, VST 2, VST 3.